Hi guys, what's up and welcome back to my channel and welcome to another video of the series hashtag 21 days of 2021 with Bhavika. I hope you are enjoying my series, and if you are new here, hi, my name is Bhavika. I make fashion, makeup, beauty and lifestyle related videos, and if you like what I am doing and if you would like to see my content further, make sure that you subscribe to my channel and click the notification bell so that you will get updates every time I post a video. So talking about today's video, आज के वीडियो के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको HOK मेकअप के बारे में जो भी मुझे पता है वो सब बता दूं, और मैंने उनसे क्या क्या खरीदा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. I have not bought a lot of products, but then जो भी मैंने लिया है, I thought of sharing it with you guys. So if you want to know all about my experience and what I have to share with you, then continue watching. First of all, let me share with you what all I bought from them. ठीक है. The first bundle of products that I bought from them are these 3 eyeshadow palettes from Makeup Revolution. मैंने इनको रिसेंटली अभी अपने चैनल पे रिव्यू किया था, और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. Talking about these three palettes are really amazing in the pigmentation that they have offered, and the color selection of the palettes is also something that I really like. So basically that is a pretty good deal when you can save a lot of money. These offers are mostly available on their website all the time, तो आप जाके checkout जरूर करिएगा. The next set of products that I bought from them is the Nika के bundle. In that you receive a mini eyeshadow palette. This is the Lucky Charm palette, which has all the green shades in it, and you get a true matte lipstick, liquid lipstick, and you get an eyeliner pencil with this. All of these products are authentic and they are really good products. I don't think there is anything wrong with the quality of the products. So those were all the products that I bought from them. Now let us move on to what I have to tell you about my experience with HOK Makeup. सबसे पहली बात तो HOK Makeup के जो combo offers हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. वहाँ पे mostly all the times हमेशा discount में ही products available होते हैं. The products that they offer are authentic, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही genuine products है. अगर आप मेकअप रिवॉल्यूशन के प्रोडक्ट कोई और वेबसाइट पे या मेकअप रिवॉल्यूशन की खुद की वेबसाइट पे भी चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे भी वो आपको इतने कम प्राइसेस में बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन HOK मेकअप पे वही प्रोडक्ट्स बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगे. सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज द डिलीवरी सिस्टम. वो काफी जल्दी प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं. लाइक इफ आई हैव ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स टुडे, आई विल गेट देम इन मोस्टली 2 to 3 days, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा. अगर मैं नायका पे से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हूँ तो वो डिलीवरी में 7 to 8 days लगा देते हैं, लेकिन HOK मेकअप बहुत ही फास्ट डिलीवरी सिस्टम फॉलो करते हैं, which I really like and appreciate. But the third thing is the packaging. The packaging of the products is also pretty nice and pretty safe, and there is no problem with the packaging of the products. Talking about this particular Nika के palettes, ये palettes हमेशा 50% डिस्काउंट में ही होते हैं. अगर आप किसी भी वेबसाइट पे चेकआउट कर लीजिए, नायका पे भी हमेशा 50% ऑफ में मिलेंगे और HOK मेकअप पे भी 50% ऑफ में ही मिलेंगे. So you can buy this from the Nika app or the HOK makeup app. The only added advantage that you have if you purchase from HOK makeup is that they will give you a bundle of प्रोडक्ट्स जिसमें आपको 1-2 प्रोडक्ट्स और भी काफी कम रेट पे मिल जाते हैं, जैसे कि इस केस में एक लिपस्टिक और एक आईलाइनर पेंसिल. सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने की है वो ये है कि वहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है. वहाँ पे कुछ ही ब्रांड्स अवेलेबल है, पर अ लॉट ऑफ गुड ब्रांड्स आर अवेलेबल देयर, जैसे LA गर्ल, Nika के, मेकअप रिवॉल्यूशन, फिजिशियंस फॉर्मूला, वेट एंड वाइल्ड, all these sorts of brands. I am going to review this Nika के palette in my coming videos. I don't know on the which day I am going to post that video, but stay tuned. The video will be coming soon. Talking about my personal experience with HOK makeup, मुझे HOK makeup से ऑर्डर करना अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और मुझे वहाँ से ऑर्डर करना भी बहुत अच्छा लगा. उनके पास बहुत अच्छे ऑफर्स भी अवेलेबल होते हैं, उनका डिलीवरी सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और आपके प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी डिलीवर भी हो जाते हैं. साथ ही साथ पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो रियली गुड. So yeah, this was just a informative video for you guys to know कि और भी जगह है जहाँ से आप मेकअप खरीद सकते हैं. This is not a sponsored video. This is my personal opinions. मुझे जो अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो ये sponsored video बिल्कुल भी नहीं है. So yeah, that was it for today's video. I hope this video was informative to you. मैंने ये information इसलिए शेयर करी क्योंकि मुझे लगा this might help you guys in ordering products.
So if you like this video, make sure that you share this video with your friends and family. Also comment down in the description box what more videos would you like me to do. I would love to hear from you guys. Make sure that you like this video and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye.